Yeah, hi guys, good evening. So guys, today is a day one. I can say that it's a demo session for data science. So today we are here just to introduce this new program. So Gaurav, over to you. We just introduce the technologies and all, why this is required and all. So over to you. Hello. Yes. Thank you so much, Gaurav again. And please, can you just confirm me once again that my voice is clear to everybody? Yeah, we can you're audible, and even your screen is also Okay. visible. Okay. Thank you. Thank you so much. Uh, First of all, this is the very first session, and I'm very excited. I'm sure that those who have want to start their journey in data science, machine learning, and artificial intelligence, they might be having some hope and they want to learn, especially in this course. So just I want before we start, I would like to know whether you are comfortable in English or Hindi, or you want a mix of both. Uh, any one of you, please, can tell me English, Hindi, or a mix of both will be fine. I am waiting for the response because this will be an interacting session. So I will be requiring some feedback from you. I think mixed language is fine. We can go with Hindi and English. Okay, okay, done, done, done. Required, we will let you know, sir. Sorry. If any issue, we will let you know. Actually, English Okay, is okay, done, 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 done. Okay. Before we start with this journey, there are many myths, there are many doubts in the students' mind. उनको नहीं समझ आ रहा होता है कि हम आगे हम इसमें कैसे प्रोसीड करें. वी आर फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड, डेटा साइंस करें या मशीन लर्निंग करें, एंड देयर आर वेरी न्यू टर्म्स which have come into play as of now. यू कैन नेम इट. डेटा इंजीनियर बनना है, डेटा एनालिसिस बनना है, हमें डेटा साइंटिस्ट बनना है, हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर बनना है, हमें मशीन लर्निंग इंजीनियर बनना चाहिए, हमें मॉडलिंग इंजीनियर बनना चाहिए, या हमें and so on. There are so many new posts which are being created because this is the niche now, and this is the future. First, I will like to give you an introduction about myself. I have 11 years of experience with working in this field, and I've worked for defense. I have worked for many other good companies, and for education purpose, I have done my computer science engineering back in 2011, and latestly I have done my artificial intelligence and machine learning degree. That is, I've done MTech from IIT Hyderabad. So, and so I think what I have gone through in these past 2 years at IIT, and I have been a placement coordinator there for the fellow students who were there, and it was very learning and very intriguing experience for me. तो बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं कि लोग कहते हैं कि नहीं, डाटा साइंस के लिए जॉब नहीं है. दे पीपल डू से दैट आगे जाके हमारा इसके अंदर हम इसको कोप अप कैसे करेंगे, हमें सीखना शुरू करना चाहिए कि नहीं. तो all those questions, all those doubts, I am going to clear you in this webinar of this course. First, so how we have designed this course, I will come on to the later stage of this presentation. बट उससे पहले मैं आपको जस्ट शुरू शुरू में हमें कुछ चीजें जो थोड़ी क्लियर करनी चाहिए, इन सब में फर्क क्या है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करूंगा. ओके. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, डेटा साइंस का हम स्कोप क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या हैं. टू बी वेरी फ्रैंक, लेट अस स्टार्ट ऑफ विद आवर जर्नी. दैट इज, जब हम किसी बिजनेस को देखते हैं, बिकॉज वी आर लिविंग इन एन इकोनॉमिक वर्ल्ड वेयर एवरीथिंग इज
नॉट चेंजिंग एवरी डे। एक टाइम आता था पहले जब हम वर्ड के ऊपर हम रिलाई करते थे, हाउ दे गिव देयर इनपुट, हाउ दे गिव देयर फीडबैक। इवन वी हैव कंसल्टेंट। आपने 10-11 साल पहले आपने जॉब के लिए देखा होगा कि यू यूज टू गो फॉर कंसल्टेंसी, कि मुझे मेरे स्किल्स के हिसाब से मुझे कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए, शुड आई गो फॉर नॉन मेडिकल, शुड आई गो फॉर मेडिकल। एंड देन वी यूज टू गो टू कॉलेजेस। हम कॉलेज में जाते हैं, हम वहाँ पूछते हैं कि हमें मैकेनिकल इंजीनियर करनी है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करनी चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। एंड उसका जो हमारा सबसे बड़ा बेसिक इसके अंदर हमारे पास व्हाट एक्सपर्ट नीड, ही नीड डेटा। वो हमसे पूछता है, ओके आप मुझे अपने बारे में बताइए कि आपको इंटरेस्ट किस चीज में है, आपके सब्जेक्ट में, आपके पिछले 10 साल के या पिछले 5 साल के एक्सपीरियंस में आपके मैथ्स में कितने नंबर थे, आपके फिजिक्स में कितने नंबर थे, आपके साइंस में कितने नंबर थे। उन सब डेटा को कोलेट करके वो आपको हमें गाइड करता है कि ओके, यू आर गुड इन बायोलॉजी, डन, यू आर गोइंग टू मेडिकल। You were good in math, you were good in physics, you were good in chemistry, okay, done, you are going to non-medical। ठीक है, तो this is how experts or counselors or consultants they used to work। The same thing we are doing now in this particular field, that is data science, that is machine learning। एंड इन सब के बीच में अभी मैं जब हम कुछ स्लाइड्स आगे मैं आपको बताऊंगा तो लॉट ऑफ थिंग्स विल गेट क्लियर। ठीक है, तो स्कोप एंड अपॉर्चुनिटीज, स्कोप मैंने आपको बताया। द थिंग इज बिजनेस इकोनॉमी, इट इज ग्रोइंग, वी हैव डेटा विद अस एंड अ लॉट ऑफ इट। कभी हर हर टर्म का एक बहुत ही स्पेसिफिक और बहुत ही इजी मीनिंग है दैट हमारे पास। आई थिंक बीच में किसी ने ऑन किया है, इफ यू कैन अनम्यूट प्लीज, इफ यू कैन म्यूट प्लीज। बाबू फारूक, आई रिक्वेस्ट अपना सबको म्यूट कर दें। थैंक यू। तो तो व्हाट आई वाज ऑन, यस। तो हमारे जो बिजनेसेस हैं, हमारी जो इकोनॉमी है, उसके अंदर पास डेटा है एंड ऑल दीज टर्म्स, जितनी भी नई नई टर्म्स आ रही हैं जो इंटरव्यूज में पूछी जाती हैं, दे आर वेरी सिंपल, यू हैव टू अंडरस्टैंड वर्ड बाय वर्ड। कुछ भी ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ भी ऐसा मुश्किल नहीं है। एंड दैट आई गारंटी यू दैट व्हेन यू विल गो थ्रू दिस मटेरियल, गो थ्रू द कोर्स विद मी, आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, इट वाज वेरी सिंपल, व्हाई वी वर सो वरीड, जैसे क्वेश्चन पूछे गए जाते हैं। बिकॉज लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, देयर वाज अ डेटा एंड देन देयर वाज अ बिग डेटा। अब बिग डेटा इंजीनियर बन गए। when the data is so much that it for a simple machine, it is unable to collate, it is unable to process that data। therefore certain new big machines were made जो उस डेटा को हैंडल कर सकें, और कुछ ऐसे मॉडल जो उस डेटा को प्रोसेस कर सके। एंड देयरफॉर बिग डेटा कम इनटू थिंग। ठीक है, बिग डेटा, बड़ा डाटा, दैट इज हाउ इट वर्क्स। अपॉर्चुनिटीज की अगर मैं बात करूं तो इट इज इन एवरी फील्ड। आज की डेट में आप अगर एक किराने की दुकान पे जाते हो, यू वेंट टू ग्रोसरी स्टोर, वहां पर कौन सा मटेरियल उसका बिक रहा है, कौन सा बिकने वाला है, they need some insight, right? I'm using this word insight, I'll be using the word knowledge, I'll be using the word uh, in insight, knowledge, and you get out with some result। कि उन सबको एक आउटपुट चाहिए सो दैट उनका जो डेड स्टॉक है, जो उनका सामान है, वो खराब ना जाए इवन इफ दे ऑर्डर समथिंग। तो आई एम टॉकिंग अबाउट किराना, आई एम टॉकिंग अबाउट हॉस्पिटल्स। उसके अंदर आज की डेट में कौन कौन सी तरह की क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनको किस तरह से डायग्नोस करके उनको ट्रीट करना है, डेटा इज देयर, दे नीड टू प्रोसेस इट। यू कम इन टू, आपको सबको कॉल आते होंगे, सर लोन ले लो, ये कर लो, वो कर लो। सबको नहीं आते, टू बी वेरी फ्रैंक। अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा है, इफ यू आर यूजिंग क्रेडिट कार्ड ऑलरेडी, और आपकी जो मंथली इनकम शो हो रही है उससे, देन आपने अगर किसी साइट के ऊपर ऐसे क्लिक किया वेयर यू वांटेड टू गो फॉर लोन, वो सारा डाटा कोलेट करके आपकी इंफॉर्मेशन वहां पर जाती है, विच एक्चुअली gives them an idea that this person might be interested in getting the loan, in taking the loan, so let's offer him। एंड आपको पहले एक कंपनी से आएगी, दूसरी कंपनी से आएगी।
I'm talking about the insurance companies. Same goes for insurance companies. Same goes for data for this banking sector. Same goes for medical sector, and all these sectors they differ. आपने अगर एक चीज में फील्ड में काम किया है, द पर्सन उसका एक्सपीरियंस, अगर वो किसी और फील्ड में सपोज वो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में काम कर रहा है, फॉर हिम इट विल बी डिफरेंट, लिटिल बिट डिफरेंट. वो जिस टूल को यूज कर रहा होगा, वो जिस रास्ते पे चल रहा होगा, दैट विल बी डिफरेंट. वो both of you will be called as data scientists. Okay, so the scope is there, and now opportunities are there. So we have come on to these two things. Let me discuss the very simple track कि हम डेटा साइंस प्रोसेस को एक बहुत ही मैं सिंपल चीज में आपको एक्सप्लेन करूंगा. ओके, so let me use this. So here is that, understanding the business problem. Why this is very important? First, I have I have worked in this sector, so I will tell you some insights of how it goes. जब भी आपके पास कोई कंपनी आती है, अनलेस अगर आप जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपर हो या आप नॉर्मल किसी उसमें काम, तो आपको फर्स्ट डे आपको काम दे दिया जाता है कि हाँ जी शुरू हो जाओ इसके ऊपर. नहीं, इट डजंट वर्क लाइक दिस. एंड व्हेन यू आर अ डेटा साइंटिस्ट, व्हेन यू आर अ डेटा एनालिसिस्ट, व्हेन यू आर अ डेटा इंजीनियर, नो, आपको बिजनेस को समझने के लिए एटलीस्ट यू गेट 2 to 2 weeks मिनिमम. ओके, तो कोई भी आपको बिजनेस आपके पास उबर आता है, उबर आपको बताता है कि ओके दिस इज आवर मॉडल, दिस इज हाउ वी वर्क. So you get at least 2 weeks if you are working 8 hours per day, and if you multiply if you're working 5 days, so around 40 hours, around you can take 80 hours. You are just understanding the business. तो ये सारा जो बिजनेस है, आप इसको समझते हो, आप इसको अंडरस्टैंड करते हो, then they give you the data. Now this data collection, I'm telling you that because all of this for हर किसी के काम के लिए अलग अलग तरह के लोग, हर हर काम के लिए अलग अलग पोस्ट बनी हुई है. तो यू विल बी डूइंग either one of them. आप या तो अगर आपका प्रेजेंटेशन स्किल्स, आपकी प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग स्किल्स अच्छे हैं, तो यू माइट बी गिवन जस्ट दिस, ओके यू अंडरस्टैंड द बिजनेस प्रॉब्लम एंड यू गिव अ प्रेजेंटेशन टू द टीम कि उसमें करना क्या है. देन देयर इज अ डेटा कलेक्शन. डेटा कलेक्शन के अंदर इट इज लाइक वी हैव अ लॉट ऑफ डेटा. अब उसमें से कुछ डेटा आपके काम का होगा, कुछ आपके काम का नहीं होगा. Then there will be certain outliers. Outliers again a very simple term which will be learning and understanding this term बाद में. Suppose अगर मैं आज की डेट में बात करता हूँ कि देयर इज एक बंदे को मिल रहे हैं, लाइक लेट्स से ही इज अर्निंग 5K. एक उसी कंपनी में somebody is earning 6K, and in that very company somebody is earning 10K. Okay, but then I get to know there is somebody who is earning 150K. So this 150K is something which is very unrealistic. कि यार बाकी सबको तो सेम प्रोफाइल की अगर कंपनी है, तो एंड if they all are under the same banner, so this is something which is very outrageous. एंड अगर मैं इसके ऊपर स्टडी करूंगा, इसके ऊपर काम करूंगा, तो दिस माइट हैम्पर माय स्टडी एंड माइट हैम्पर माय रिजल्ट. तो हम इसको इग्नोर करते हैं. तो दिस काइंड ऑफ आउटलायर. ठीक है, तो अब इन चीजों को इग्नोर करना, इट इज नॉट समथिंग वेरी सिंपल, इट इज नॉट वेरी मैथमेटिकल. ठीक है, अभी मैं आपसे ना कुछ मैं चाहूंगा कि आप मुझे थोड़ा सा इसमें यू गिव मी सम मोर आइडिया कि हम जो डेटा कलेक्शन में, हम अगर सपोज मेरे पास किस तरह का डेटा है, उसके अंदर और किस किस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है. एनी वन ऑफ यू हु इज लिसनिंग एंड हु इज अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम आस्किंग. अगर मेरे पास डेटा आया है, मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे पास डेटा आया है, ठीक है, उस डेटा के अंदर मुझे किस किस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है. डेटा आई एम सेइंग यू इट्स इन अ कॉलम, इट्स इन अ टेबल फॉर्म. ठीक है, मेरे पास टेबल फॉर्म है जिसमें देयर आर रोज, देयर आर कॉलम्स. ठीक है, एंड फॉर मोर स्पेसिफिक लेट अस टेक कार सेल्स का. मेरे पास कार सेल्स का डेटा आया हुआ है. ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास किस किस तरह की प्रॉब्लम आ सकती हैं जो डेटा कलेक्शन में हो सकती हैं. जस्ट गिव मी some insight, what can it be? Anybody please.
Anybody who would like to pitch in कि हमें मेरे पास डेटा आया है तो उसके अंदर किस किस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? Which type of data? आई हैव टोल्ड कि सपोज मेरे पास कार सेल्स की एक डिटेल आई है, यू कैन टेक एनीबडी, आपके पास ठीक है, आपके पास ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर आया है, कितने किलोमीटर ये रन करती हैं, उसके बारे में कुछ डेटा आया है। आपके पास जो भी सपोज डेटा आता है आपके पास, उसके अंदर आपको व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स विल यू कैन इनकाउंटर कि आपके पास सपोज मैं चलो कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज में बात करता हूँ कि मेरे पास जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया था 5K 6K 10K 150K, तो मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम लग रही थी, ठीक है 150K समथिंग वेरी डिफरेंट, मुझे इसको इग्नोर करना चाहिए। सपोज अगर मैं कार सेल्स की बात करता हूँ, तो व्हाट काइंड ऑफ डेटा आर यू एक्सपेक्टिंग? पहले तो मुझे 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 एक सपोज Hyundai कंपनी है, Hyundai कंपनी ने मुझे बोला कि हमारी कार की सेल्स हमें बढ़ानी है, ठीक है। तो हमें कार की सेल्स में हमारे पास मिड सेगमेंट, हम 3 सेगमेंट की बात करते हैं, स्मॉल मिड एंड हाई सेगमेंट। हमारे पास ये 3 तरह की कार्स हैं। अब मिड सेगमेंट में व्हाट काइंड ऑफ डेटा आर यू एक्सपेक्टिंग? जस्ट simple insights, anything what you can think, then I will again I'll clarify. Okay, let me help you. Uh, let us say, let me give you an example. Suppose मेरे पास एक टेबल फॉर्मेट में मेरे डेटा इंजीनियर ने मुझे डेटा आगे फॉरवर्ड किया है, राइट, एंड उसके अंदर आई एम गेटिंग सर्टेन वैल्यूज जिसके अंदर देर आर सर्टेन कॉलम्स जिसके अंदर कुछ भरा ही नहीं हुआ, ठीक है। देन देर आर सर्टेन वैल्यूज, एक ये प्रॉब्लम आ सकती है कि मेरे कुछ ऐसी एंट्रीज होंगी विच आर एम्प्टी, राइट। देन अनदर प्रॉब्लम कैन बी कि जो मैंने आउटलायर की बात करी थी, जो कि जनरली होना चाहिए आपकी या तो बहुत ज्यादा है या बहुत ज्यादा कम है, ओके। देन अगर मैं सेल्स की बात करूं तो इट हैज टू बी स्टार्ट फ्रॉम इट हैज टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो, जीरो से लेकर इट कैन गो टू इंफिनिटी, बट इट कैन नॉट बी -1, राइट। एक दिस इज वेरी कॉमन सेंस कि अगर मैं सेल कर रहा हूँ गाड़ी की तो वो -1 में नहीं हो सकती, है ना। तो देयर विल बी सर्टेन एंट्रीज विच विल बी absurd कि यार ये तो दिस something which I'm getting here is of something which is not desired, which cannot be true. So then we have to ignore such entries also. ठीक है? Now are you getting what kind of question I was asking? Yes or no? Yes, Gaurav. Okay. So there are such entries जिसके अंदर I'm getting my I can hear my own voice. I think somebody has muted himself. Santosh, please can you unmute yourself? Santosh, please mute. Okay, thank you. Again, so data collection is one field जिसमें आपको अलग अलग जगह से डेटा आता है, राइट। देन देयर इज डेटा क्लीनिंग एंड एक्सप्लोरेशन जिसके अंदर मैं आपको बताया था सर्टेन एंट्रीज विच यू हैव टू इग्नोर। डेटा कलेक्शन के बहुत सारे सोर्स हो सकते हैं, इधर इट कैन बी अ सर्वे। हमारा जब सबका आधार कार्ड बन रहा था देन देयर वाज अ सर्वे व्हिच वाज डन, कितनी हमारी नॉर्मल पॉपुलेशन काउंट होता है जब, तो एवरीबडी दे कम टू योर प्लेस, वो आपको देखते हैं कि हाँ जी कितने आपके घर में लोग रहते हैं और इनकी लास्ट कितने साल से आपके पास यहाँ रह रहे हैं। अगर आपके घर पे कोई किराएदार रहता है तो वहाँ पर कितने लोग रहते हैं, वो कहाँ से शिफ्ट हुए हैं, कहाँ से मूव करें, कब मूव करें। तो दिस काइंड ऑफ सर्वेज आर देयर। देन देयर आर सर्टेन फॉर्म्स विच यू गेट। आपको सपोज इफ यू आर इंटरेस्टेड इन समथिंग देन यू गेट अ फॉर्म in which
आप अपना डेटा फीड करते हो कि ओके यू आर इंटरेस्टेड इन डेटा साइंस प्रोग्राम, so then you are called back and simply a list is being prepared, so it gives, and now this whole data, it is being collated somewhere. आज की डेट में data is the crude oil. Arab countries, they got rich because of oil, and आज की डेट में any company who is having data, not only data but a processed data, they are going to be rich. That is why data scientists, machine learning engineers, and artificial intelligence engineers, they are going to they're going to thrive. तो बहुत तरह से डेटा कलेक्शन के आप लोगों को घर भेजते हो, यू एम्प्लॉय द मैन पावर, देन कई बार बूथ लगाते हो कि ओके वहां पर आप लोग आते हैं, आपसे आपसे फीडबैक लेते हैं, एंड दे काइंड ऑफ आउट ऑफ एग्जॉबरेंस आप जाते हो वहां पर, देन दे गिवन सम गुडीज, राइट? तो डेटा कलेक्शन के बहुत सारे तरीके हैं. दिस इज वन अनदर फील्ड. सबसे पहले आपने बिजनेस को समझा, बिजनेस करता क्या है, देन उससे रिलेटेड आपकी जो प्रॉब्लम है, आपने बिजनेस को समझा और वहां पर जो आपको प्रॉब्लम बताई गई है, आई एम अंडरलाइनिंग इट, प्रॉब्लम, आपको जो प्रॉब्लम बताई गई है उससे रिलेटेड आपको डेटा कौन सा क्या क्या चाहिए हो सकता है, आप उस डेटा को कलेक्ट करने के लिए यू टेल दैट कंपनी, ओके, एंड उस कंपनी को आप बताते हो, एंड दे do that data collection, or they hire somebody who is into data collection. Then there is data cleaning and exploration, a very simple term, a very understandable. इसके अंदर मैंने आपको ये 3-4 चीजें एग्जांपल जो बताए थे, लाइक गलत एंट्री, anything which is an outlier, sometime null entry is there, वो आपको उसमें फीड करनी होती है, so that your machine can learn it in a better way. उसके बाद हम उसको एक्सप्लोर करते हैं. एक्सप्लोरेशन में व्यू काइंड ऑफ कम आउट विद सम इनसाइट कि डेटा बता क्या रहा है मुझे. डोंट वरी, वी विल अंडरस्टैंड each bit one by one, very simple language, and you need not worry about anything, because आज की डेट में ऐसे टूल्स और ऐसी लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं that all of it is done in simple 2 to 3 lines. Now आपने डेटा क्लीनिंग एंड एक्सप्लोरेशन करी. नाउ दिस टर्म वी बिल्ड मॉडल. व्हाट इज दिस बिल्ड मॉडल यार? नाउ इनिशियली क्या होता था कि इट इज मैथ प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. नाउ आई विल नॉट से कि आपको कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए, बट यस, अंडरस्टैंडिंग मैथ, इट इज वन ऑफ द मेजर थिंग. Basically, if you know, if you can understand data, अगर डेटा को मैं अभी आपको एक बहुत सारा, जैसे मेरे पास हमारे पास एक बड़ा सा एक्सेल शीट आ जाती है, एक उसके अंदर नंबर लिखे हुए हैं, यू काइंड ऑफ लुक एट इट एंड यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, बट मैं आपको देता हूँ कि ठीक है, दिस इज दी सपोज ये मैंने आपको डाला जनवरी, ओके, एंड फिर हमने यहाँ पर डाला टिल दिसंबर. तो हमारा जो टेम्परेचर है, इट, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ टेम्परेचर, दिस इज समथिंग वेरी सिंपल. हमने देखा कि हमारा जनवरी में एट जो मेरा सपोज, सॉरी, चलो मैं इसको जैन, तो यहाँ पर इसको हम यहाँ पे वी डू इट टिल दिसंबर, एंड दिस, लेट दिस लाइन शो द टेम्परेचर, ओके. तो जनवरी में हमारा थोड़ी ठंड होती है, फिर हमारा मार्च अप्रैल होते हैं, थोड़ा थोड़ा हमारी गर्मी बढ़ने लग जाती है, एंड बाय जून इट इज क्वाइट हॉट, और ये धीरे धीरे फिर हमारा कम होता है, एंड टिल दिसंबर अगेन इट इज वेरी कूल. तो ये जो मेरा टेम्परेचर, अगर मैं इसको बढ़ते हुए दे रहा हूँ, तो इट इज अराउंड, सपोज अगर ये मेरा 3-4 डिग्री के आसपास है, तो ये 4 डिग्री के आसपास है, एंड इट गोज अप टू 40 डिग्री. तो दिस इज हाउ इट शोज. नाउ यू एट एनी टाइम, अगर मैं पूछता हूँ कि यार जून में कैसा होगा, तो यहाँ पर आपको पता है जून बीच में कहीं लाई करता है, तो यस, यू पुट अ लाइन हेयर एंड यू सी द टेम्परेचर यहाँ पर, तो लगभग यस इतना टेम्परेचर रहता है, एंड इट इज हॉट. So this is something you kind of understand with the data. Okay. तो जो हमने सपोज अभी हमने जो स्टैटिस्टिक्स के थ्रू किया, अगर हम कंप्यूटर पे प्रोग्राम करते हैं इन चीजों को समझ के, इनको आगे प्रोसेस करने के लिए, दैट इज कॉल्ड मॉडल बिल्डिंग. ओके. अब हमने मॉडल बिल्ड करा, एंड देन वी कम ऑन टू अ कंक्लूजन, वी कम ऑन टू अ रिजल्ट, दैट इज कॉल्ड कलेक्टिंग इनसाइट. नाउ
this is a very simple process which I have told you. This is how it works. आपको कभी भी पूरा काम नहीं दिया जाता है कि okay, you start from the business problem understanding and you give me an insight. No, you are given a part of it. इनमें से कोई छोटा सा पार्ट होगा, आप बहुत कुछ सीखते हो, बट कंपनी में आपसे सिंपल 2 या 3 आपको टूल्स को यूज करके आपको एक छोटा सा काम करके देना होता है. एंड सबसे अच्छी बात विच आई थिंक यू लाइक टू हियर इज it is a very cozy and relaxed environment in which data scientists work. क्योंकि they think a lot. अगर उनको फंडामेंटल्स क्लियर है, उनकी फाउंडेशन क्लियर है, देन एवरीथिंग इज गुडी गुडी. बट अगर आपकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है एंड इफ यू आर ट्राइंग टू जंप द गन, तो वहां पर आपको मुश्किल होती है. ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. तो वेरी सिंपल थिंग जो मुझसे बहुत सारी बार क्वेश्चंस में पूछी जाती है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, अच्छा हम डायरेक्टली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करेंगे या हम डीप लर्निंग कर लेते हैं, या आप हमें डीप लर्निंग भी सिखाओगे, आप डीप लर्निंग में क्या क्या सिखाओगे, आप सीवी कराओ, मतलब कंप्यूटर विजन करेंगे कि हम एनएलपी करेंगे. तो आई विल ट्राई एंड एक्सप्लेन यू इन वेरी सिंपल टर्म्स. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? So in this, as I have written, computers performing tasks without explicitly programming them. तो हमारे जो कंप्यूटर की एबिलिटी है किसी भी काम को करने की जिसमें हम उसको प्रोग्राम ना करें, दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ठीक है, हमने उसको, एक प्रोग्राम क्या होता है? अ प्रोग्राम इज, व्हाट इज अ प्रोग्राम? एनीबडी, इफ somebody want to answer it? Sorry, हाँ जी, anybody who want to answer it, what is programming? Anybody? So what is a program? So what is a program? A program is a simple set of instructions. It is a simple set of instructions which is given to a computer, which is given to the computer. उसको हम set of instructions देते हैं, ठीक है, हम उसको डेटा देते हैं, एंड ये दोनों को डाल के हम कंप्यूटर में डालते हैं, एंड वी एक्सपेक्ट सम रिजल्ट आउट ऑफ इट, राइट? तो this program, set of instruction, it has to be something which can be understood by the computer. Okay, so it can be any language. It can be C, it can be C++, it can be Java, it can be Python, it can be R, and many more. There are around 700 different languages which are there. But right now, due to advancement in this field and the libraries which have already been created for easy assimilation, the Python is the recommended language. Everybody is learning on the is working on the same. Like हम हिंदी में भी बात कर सकते हैं, हमेशा हम हिंदी में लेटर लिख सकते हैं, but because now we are dealing with companies which are which have their base abroad, which have their base in Silicon Valley, which have their base in San Francisco, whatever, and so they all are working on a very simple, similar language. So if they are speaking English, that is what we have to do here. जो हमारी मातृभाषा हिंदी में है, but yes, we talk in English and we try to explain in English. So this is why English is important, because globalization, and everybody has to pitch in, everybody has to be on the same line. So that is why Python is the recommended language. अगर आप कहते हो नहीं नहीं भाई मैं तो R में ही R language सीख के करना चाहता हूँ, it is up to you. But if the other company is not using R, you have to learn Python again. Okay, but it is similar, more or less similar. It is more mathematically sound, and but it has more libraries, and everything is covered in Python. So just for making you understand this. Okay, so जो अगर हम सपोज अब कमिंग बैक टू द टॉपिक, अगर मैं इसके अंदर अपने कंप्यूटर को हम प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं, तो वो मेरा
जो कंप्यूटर है विदाउट प्रोग्रामिंग अगर वो हमारा परफॉर्म करता है टास्क, उसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। ठीक है, नाउ दिस artificial intelligence has been further subdivided into two parts, that is general AI and narrow AI. That is general artificial intelligence and narrow artificial intelligence. So अभी anybody who want to answer this question, general AI क्या हो सकता है, narrow AI क्या हो सकता है? Anybody of you can unmute, give तुक्का ही मारो यार, कोई बात नहीं, गलत होगा बट Artificial intelligence is like it learns it, with doing tasks, or it has some model given to it, like like some databases given to it to learn, and it learns from या that. ओके ना, माय क्वेश्चन इज जनरल एआई और नैरो एआई में क्या डिफरेंस है? मतलब इट हैज बीन फर्दर सब डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एआई हैज बीन फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, जनरल एआई एंड नैरो एआई। सो इफ यू वुड लाइक टू आंसर इट कि जनरल एआई क्या हो सकता है, नैरो एआई क्या हो सकता है, जस्ट एक रैंडम तुक्का, एंड देन यू विल रिमेंबर इट फॉर लाइफ। आई विल एक्सप्लेन यू। हाँ जी अनिरुद्ध, एनीबडी? Don't Uh, worry, I'm telling you. Everything, every topic we are going to talk about, we have to read. Not now, till the end of this course. मैं simple इस language में ही बात करूंगा. It is something general. It is narrow. Give a random thought and just answer. And if it is wrong, then I will clarify. Not an issue. Narrow is something like for a specific task. Very nice, very nice. बिल्कुल ठीक. And general क्या हो सकता है? General will be like it can be used for multi-purpose. Like it can be used anywhere. Thank you so much, Anirudh. And you are absolutely right. I will further elaborate on this. Okay. So what generally is, when you are interested in getting the computer carry out wide variety of tasks. Okay. अब यार हम में से किसने, मेरे ख्याल से सबने टर्मिनेटर देखी होगी, है ना? तो टर्मिनेटर 1 2 3 आई डोंट नो उसमें जो इतनी आई थी, तो बाय द टाइम जब आर्नोल्ड थोड़ा सा और बुढ़ा हो गया था, तो उसके जो ओपोनेंट्स आ रहे थे, दे हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट, है ना? नाउ इन दैट ऐसी कई गेम्स भी देखते हैं जिसके अंदर कंप्यूटर सपोज रोबोट इज, ही इज एक्सपेक्टेड टू डू एवरीथिंग। उसको एक टास्क मिला है, ही हैज टू किल जॉन कॉर्नर, इसी यही नाम था शायद, यस ये नाम था या, तो उसको उसको मारना था। दैट वाज द टास्क विच वाज गिवन टू हिम। कैसे मारना है ये उन्होंने नहीं बताया था, तो उसको हमने प्रोग्राम नहीं किया था कि कैसे मारना है, बट उसको एक टास्क मिल गया था, भैया तूने जॉन कॉर्नर को जाके वापस हिस्ट्री में जाना है, अपना वापस जाना है तूने टाइम मशीन यूज करके, एंड यू हैव टू किल हिम। ठीक है, इट इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। without programming you have given a task and computer is performing it. So I think अभी ये लाइन आपको क्लियर होनी शुरू हो गई होगी, राइट? बट इन दैट it is given, you are expecting to do a computer do a wide variety of tasks like humans. We think, we see things, we differentiate कि हाँ यार ये ठंडा है, ये गर्म है, ये हैवी है, ये हल्का है, एंड आप किसी को देखते हो तो आपको सबके चेहरे दिखते हैं, आप सबको, जिनको आप लोगों को जानते हो अच्छे से, जिनके साथ आप उठते बैठते हो, आपको उनके नाम रिकॉग्नाइज हो जाते हैं, आप उनका नाम जानते हो, राइट? आप किसी चीज को टच करते हो तो आपको पता लगता हो कि यार ये सॉफ्ट है, ये हार्ड है। तो वी आर डूइंग वाइड वैरायटीज ऑफ थिंग्स। so this is what a general AI says. And as on date, as of now, we are very, very far away from this. Okay. Now coming on to the narrow AI, as Anirudh ने बहुत ही ठीक से बताया, when you are going for a specific task. So in this हम मशीन को एक सिंपल और एक बहुत ही नैरो टास्क, हम इसमें बहुत ही सिंपल या हम एक
pardon my writing, it is like this, but I will try to increase. ओके, तो बहुत ही सिंपल, और अगर हम उसको या नैरो हम उसको टास्क करने के लिए देते हैं, देन एंड वो हम कहते हैं कि वो अपने आप सीखे। मैंने आज उसको सपोज क ख ग सिखाया है, ओके, तो बट कल को अगर वो मैं उसको ए बी सी डी भी देता हूँ, देन ही शुड देन मेरा कंप्यूटर डिफरेंशिएट कर सके कि इट इज फॉर ए फॉर एप्पल एंड बी फॉर बॉल। so this is something we are coming on to a very specific thing, okay। तो सपोज एग्जांपल मैं देता हूँ आपको, किसी स्पीच को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना। आप अच्छा, सबसे अच्छा एग्जांपल आप जब हम व्हाट्सएप पे चैट करते हैं, राइट, अभी हमने पहले होता था कि सपोज अगर आपने मैं जा रहा हूँ, आपने मैं लिखा तो MAIN लिखा जाता था, बट नाउ आप MAI करके भेजते हो, देन दैट योर इवन योर मोबाइल इट इज लर्निंग कि आप मैं को मैं लिखते हो, MAI लिखते हो, MAIN नहीं लिखते, राइट। तो अगली बार आपको सजेशन में मैं लिख के देगा वो। So this is something it is learning. It is getting an insight of what you actually want, what you are doing. ठीक है, तो स्पीच को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, वेरी स्मॉल एग्जांपल ऑफ नैरो एआई। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू कि भैया एआई और एमएल में क्या फर्क है। ओके, तो नाउ machine learning it is a sub part of artificial intelligence, ओके। तो इसके अंदर जो हमारी एप्लीकेशन हैं एआई की टू डू स्पेसिफिक टास्क, दे आर कैरीड आउट बाय मशीन लर्निंग। इसके अंदर मैं बहुत ही सिंपल सा और एक बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल, एक आपको डायग्राम बना के देता हूँ, बिकॉज इट विल बी वेरी सिंपल फॉर यू टू अंडरस्टैंड। हम क्या करते थे, सपोज जैसे मैंने आपको पहले बना के दिखाया था, लेट अस सी दिस इज समथिंग अ सिस्टम, लेट अस कॉल अ सिस्टम, राइट, सिस्टम मॉडल व्हाटएवर यू वांट टू से। अब इसके अंदर मैंने कुछ डेटा डाला, ठीक है, ये हमने जब हम कंप्यूटर सीखते थे 5th 6th में, तब से ये डायग्राम बना रहे हैं। हमने उसको कुछ रूल्स दिए एंड देन वी एक्सपेक्टेड सम आउटपुट, ओके, आउटपुट कह लो, आंसर कह लो, समथिंग। बट नाउ विद मशीन लर्निंग व्हाट वी डू इज, हमने एक सिस्टम बनाया, दिस इज व्हाट वी हैव गॉट, दिस इज अ सिस्टम। हमने इसके अंदर ये डेटा डाला। डेटा इज नॉट जस्ट डेटा कि हमने उठा के डेटा डाल दिया, डेटा इट इज समथिंग विच हैज ऑलरेडी बीन कलेक्टेड, इट हैज ऑलरेडी बीन रिफाइंड। तो जो हमने वो 3 स्टेप्स पढ़े थे, अभी मैं उसको थोड़ा थोड़ा पीछे पीछे लिंक करता रहूंगा, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड, ओके। तो अभी हमने एआई का था, ये हमने इसको याद रखना, नैरो एआई को, ठीक है, क्योंकि दिस इज व्हाट वी आर एज ऑन डेट 2023 में, ये अभी हम ये कर रहे हैं। तो हमने डेटा लिया, देन इसमें से हमने कुछ हमसे इसके कुछ आउटपुट आई, उसके लिए हमें कुछ रूल्स डालने पड़ेंगे, राइट। मैं रूल्स नीचे शो कर देता हूँ, ओके। बट इस आउटपुट को, ये आउटपुट मेरे पसंद की नहीं आई। आई वांटेड कि भैया मेरा जो बिजनेस है, मुझे जो प्रॉफिट चाहिए दैट हैज टू बी 90% यार, मुझे तो 90% प्रॉफिट से नीचे लेना ही नहीं है। एंड दैट इज आई एम पेइंग यू, आई एम पेइंग मशीन लर्निंग इंजीनियर, आई एम पेइंग अ डेटा साइंटिस्ट। भैया तू मुझे 90% से कम प्रॉफिट मत दे। एवरीबडी इज अ लाला आउट देयर, जिसको भैया पैसे चाहिए, पैसे कमाने हैं, ओके। तो व्हाट वी डू, यहाँ पे हम एक टैप लगाते हैं एंड ये पूरी आउटपुट जो है, हम इसको वापस इसी सिस्टम में डालते हैं, ओके। देयर आर सर्टेन रूल्स, देयर इज अ डेटा एंड देयर इज द मशीन which was giving an output, उसी आउटपुट को वापस लेती है। अब इस आउटपुट में कितना परसेंट, सपोज अब मैं बहुत ही सिंपल से एग्जांपल लेता हूँ, यू विल अंडरस्टैंड। मेरा प्रॉफिट आया सपोज 70%। अब वो देखता है यार 70% आया है, डेटा मेरे पास ये था, मैं भी कितने डिफरेंस पे हूँ, 20% के डिफरेंस के ऊपर हूँ। इस 20% को कवर अप करने के लिए आई नीड टू प्ले अराउंड विद दिस थिंग, ठीक है, या जो मैं इनपुट डाल रहा हूँ, या तो मैं अगर सपोज मैं कार कंपनी का जैसे हम एग्जाम्पल लेते, कार कंपनी में अगर मैं उसकी, वी आर वर्किंग इन इंडिया, यू हैव टू बी वेरी वेरी लॉजिकल, ठीक है। हमें यहाँ पे स्पीड नहीं चाहिए, पीपल हु हैव कि यार ये तो ना 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में जाएगी गाड़ी, नोबडी विल बाय इट, ठीक है।
अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि यार सिंपल एग्जांपल कि इफ आई गिव यू अ कार विच इज गिविंग 50 किलोमीटर पर लीटर, ठीक है, ये भी आपको सपोज 10 लाख में मिल रही है, एंड मैं आपको एक और गाड़ी देता हूँ 10 लाख में विच वैसे तो वो 2 किलोमीटर पर लीटर चलती है, बट इट कैन गो अप टू 350 किलोमीटर, 350 किलोमीटर पर आवर। इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, ठीक है, बट इसकी एवरेज बहुत बेकार है। आई एम गिविंग यू एग्जैक्टली 10 lakhs फॉर ईच ऑफ इट, ठीक है, और एक 50 किलोमीटर पर बट इट विल गो ऑन अ डिसेंट स्पीड ऑफ अराउंड 120 से के आसपास चली जाएगी, विच इज इवन नॉट इवन हाफ ऑफ इट, है ना। ओके, you you are here in India, what will you buy? Option 1 or option 2? I want answer. Unmute करो and कुछ आंसर दो and उसका रीजन। Anybody can answer. This is a very simple question. मेरे पास सेम मैंने आपको दोनों का पैसे दिए हैं। एक गाड़ी है जो 50 किलोमीटर चलती है 1 लीटर में एंड उसकी डिसेंट स्पीड है, 120 किलोमीटर। दूसरी गाड़ी है उसके लिए मैंने आपको 10 लाख दिए हैं, उसकी एवरेज बहुत कम है बट उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, तो 350 किलोमीटर पर आवर तक जा सकती है। So as an Indian, what would you like to buy? Anybody? As an average Indian, I think everybody would like to go with option number 1. Okay. So getting to know the environment is very important. Again, I have used a special term, environment. Note it down. Okay. तो ये environment भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। Okay. तो अभी हमने इसके अंदर भी हमने क्या देखा कि बिकॉज 350 किलोमीटर पर आवर अगर मैं लेके जाऊंगा तो ऑलमोस्ट मेरा शायद पहले ही चौक के ऊपर चलान हो जाएगा, या कोई ना कोई यहाँ पे गाय बकरी या कोई ना कोई सामने से बंदा आगे आ जाएगा, विच आई विल गेट होल्ड ऑफ एन एक्सीडेंट, फिर साथ प्रॉब्लम्स आएंगी। तो नो बडी वॉन्ट टू गो फॉर ऑप्शन नंबर 2 इवन इफ दे आर सुपर रिच, ठीक है, तभी वो कहेंगे ठीक है यार, लेट अस गो विद समथिंग जो कि मैं 120 तक भी नहीं ज्यादा जा पाता इंडिया में, ऐसी बहुत जगह बहुत ही कम रोड है जहाँ पर इतनी स्पीड अलाउड है, तो दैट इज व्हाई वी गो फॉर इट। तो अब उस चीज के अंदर जब डेटा जो है, मैं व्हाट आई वाज रेफरिंग टू विद दीज टू एग्जांपल इज कि जो डेटा है इसके अंदर मैं इसको क्या ट्वीक करूं। आई शुड गिव मैक्सिमम माइलेज बट लेस ऑफ द स्पीड, देन ऑल्सो इट विल वर्क, ठीक है। अगर मैं ये चीज ज्यादा देता हूँ लोगों को, ये चीज मैं देता हूँ लोगों को, देन यस दे विल गो फॉर दैट, दे विल गो फॉर माई कार विच आई एम मैन्युफैक्चरिंग, एंड ये 70 से बढ़ के 90% पहुंच जाएगा। तो व्हाट ऑल ऑफ दिस, जो कि मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया, हमने शायद कॉमन सेंस से सीखा है, बट ऑल ऑफ दिस कैन बी अचीव्ड बाय सिंपल दिस मॉडल। तो ये हमारा अभी मशीन लर्निंग ये काम करती है। ओके, अभी हम बात करते हैं व्हाट मशीन लर्निंग इज आल्सो फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ओके, फर्स्ट इज द सुपरवाइज्ड लर्निंग, ये आपने सुना होगा, विच इज वेरी एविडेंटली आस्क्ड इन ऑल द इंटरव्यूज आल्सो। देन द अदर इज अनसुपरवाइज्ड, ओके, एंड द थर्ड इज, you can call it reinforcement learning. All these are types of machine learning. Reinforcement nobody tells you, but it is kind of semi supervised, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो सब कुछ सुपरविजन के हिसाब से ही है, बट दिस इज सुपरवाइज, दिस इज अनसुपरवाइज एंड वन इज रीइंफोर्समेंट विच इज सेमी सुपरवाइज। ओके, अब हम इसको एक एक करके हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो मेरी जो सुपरवाइज लर्निंग है, एज यू कैन सी हियर, it is further divided into two types, that is classification and regression। तो जो हमारी क्लासिफिकेशन होती है इसके अंदर इट इज इफ यू वांट टू ग्रुप टू ग्रुप द सपोज ग्रुप जो अपने एक ग्रुप को दो हिस्सों में डिवाइड करना है। सपोज somebody इज हार्ड वर्किंग पीपल एंड नॉट हार्ड वर्किंग पीपल, ओके, so in that case classification is
इज यूज। ठीक है, तो ग्रुपिंग अगर आपको करनी है, आपको कैटेगरीज में डिवाइड करना है, कैटेगरीज और कैटेगराइज करना है, या उसके लेबल, यू इट इज द सेम थिंग, आप उसको लेबल भी कह सकते हो। तो व्हेन दीज टू थिंग्स आर देयर, तो देन इट इज अ क्लासिफिकेशन टास्क। व्हाट इज अ रिग्रेशन? अगर मैं एक सपोज वेदर फोरकास्ट करना चाहता हूँ, डिपेंडिंग ऑन कि मेरे पिछले हफ्ते से क्या कल बारिश होगी कि नहीं होगी। लाइक आप एक्यू वेदर में चेक करते हो कि फ्राइडे को मैंने घूमने जाना है दोस्तों के साथ, ओके उस दिन बारिश है कि नहीं। तो इट सी दी ओवरऑल टेम्परेचर अभी क्या चल रहा है, बारिश हो रही है नहीं हो रही है, एंड लॉट ऑफ अदर डेटा कि बादल कहाँ हैं कहाँ नहीं है, हाउ इज द ह्यूमिडिटी लेवल एंड एवरीथिंग, एंड इट गिव्स यू अ फोरकास्ट। तो दिस काइंड ऑफ फोरकास्टिंग थिंग, या सेल्स फोरकास्ट करनी है, इट इज अ रिग्रेशन मॉडल। तो बेसिकली इट रीड कॉन्टिन्यूस वैल्यूज एंड उसके बेसिस के ऊपर वो आपको आउटकम देता है। ओके, देन देर इज समथिंग कॉल्ड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, जो कि मैंने आपको सेकंड पार्ट था। इट इज नाउ क्लस्टरिंग। अगेन क्लस्टरिंग में जैसे हमने पहले क्लासिफिकेशन में हमने एक ही तरह के हमने बहुत सारे चेहरे थे, उनमें से हमने किसी को क्लासीफाई किया, ओके ये आदमी है, ये औरत है, इसका नाम ये है, उसका नाम वो है। बट क्लस्टरिंग में यू ग्रुप, सपोज अ कैट आपको दो चीजें दे रही हैं, दे आर डॉग्स, देयर आर कैट्स, एंड यू वांट टू ग्रुप देम। ये ओके, ये वाला जो ग्रुप है दिस इज डॉग एंड दिस इज अ ग्रुप, देयर आर कैट्स, so this is called clustering model usually. Then there is dimensionality reduction. अब वेरी सिंपल, हम इसके बारे में ईच एंड एवरीथिंग वी विल गो इनटू डीप इन डिटेल, बट अभी मैं सिर्फ उनके नाम के थ्रू हम इसको कैसे समझना चाहिए, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। ठीक है, और ए आई एम एल और हमारा डीप लर्निंग और डेटा साइंस की अलग अलग कितने अलग अलग हैं, हमें क्या बनना चाहिए, दैट यू विल अंडरस्टैंड विद दिस प्रेजेंटेशन। तो जब डायमेंशन हम रिडक्शन करते हैं, तो इसके अंदर जो हमारे फीचर्स हैं, अगर हम उनको कंडेंस करते हैं, दैट इज कॉल्ड डायमेंशन रिडक्शन, सिंपल। ठीक है, देन देर इज reinforcement learning, in which there are four things: agent, action, environment, and reward. This is the term which I used in my अभी थोड़ी देर पहले। okay, so it works on reinforcement या semi supervised जो मैंने बोला था, it works on a very simple logic. Suppose there is a dog and you have given that dog a task. So that dog, if it would do good and आपको सुनता है, okay आपने बॉल फेंकी, वो बॉल लेके आता है, and then you feed that dog, आप उसको फूड देते हो। ठीक है, तो all of it, this is a very simple example of unsupervised learning, और आप उसको रिवॉर्ड देते हो। then again it kinds of do the same thing, अगर और अच्छा काम करता है तो आप उसको और ज्यादा रिवॉर्ड देते हो। दिस इज हाउ अनसुपरवाइज लर्निंग विल वर्क। ठीक है, तो हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सब पार्ट है मशीन लर्निंग। नाउ कमिंग ऑन टू द डीप लर्निंग, दिस इज समथिंग, मेरी जितने भी इसके अंदर देयर इज अ न्यूरल नेटवर्क विच इज देयर, मेरे पास इनपुट्स हैं बहुत सारी, हमने इसमें हिडन लेयर्स हैं, हर तरह से वो इंसाइट लेके इट प्रोसेसेस इट एंड इट कम ऑन टू अ कॉमन कंक्लूजन, दैट इज द आउटपुट। तो डीप लर्निंग में हमारे डीप न्यूरल नेटवर्क इट फंक्शंस लाइक अ ब्रेन, कि यार डिपेंडिंग ऑन कि आपने किसी चीज को हाथ लगाया, वो गर्म थी, आपका हाथ जल गया। नेक्स्ट टाइम बिफोर टचिंग दैट थिंग, यू विल फर्स्टली चेक, अगर आपने प्रेस को हाथ लगाया था पहली बार आपका हाथ जला था, दूसरी बार आप पक्का ध्यान से रखोगे कि यार प्रेस ऑन तो नहीं है, जस्ट उसके पास हाथ करके देख रहा हूँ उसमें से एक तो नहीं निकल रहा, सो दैट मेरा हाथ ना जल जाए। तो दिस इज व्हाट डीप लर्निंग एक्चुअली डू। ठीक है, coming on to the course map, जो कि over a period of 3.5 months, which I think we will be able to be at a situation where we are job worthy. बहुत everything we do for a purpose. Our purpose here and of the networking is that yes, anybody who is coming here, he should be worthy enough to get a job. So that is what this course map has been designed. तो जैसे इसके अंदर अभी इंट्रोडक्टरी सेक्शन हैं, this have included specifically because you should know what you will be doing. ठीक है, बेसिक पार्ट आ जाता है, सबसे पहले लोग पाइथन कहते हैं, पाइथन सीखो, बट इट इज जस्ट अ टूल। तो टू लर्न समथिंग,
आपको अगर स्टैटिस्टिक्स समझ आती है, स्टैटिस्टिक्स अगेन मैथमेटिक्स, डेटा को किस तरह से उसको क्या क्या उसके ऊपर हम वो लगा सकते हैं, फंक्शंस लगा सकते हैं, किस तरह से उसको देख सकते हैं, उससे हम क्या समझ रहे हैं, उन उस सारे की चीज़ों को बहुत ही सिंपल एक-एक लाइन के अंदर हम ये लैंग्वेज दैट इज़ पाइथन हम यूज़ करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। Then there are certain modeling, that is machine learning, because every business is looking for a model. आप इन दो चीजों से statistics और Python, if you have done this, any company will take you. I'm telling you, any company. मैंने because as I told you कि मैं IIT हैदराबाद में I was displacement coordinator for my course. तो उसके अंदर जो मैंने चीजें देखी, it was anybody who has sound knowledge of statistics, who knows Python for specific things, they were getting a job. मशीन लर्निंग का पता होना चाहिए कि कौन कौन से तरह की चीजें हैं, डीप किस तरह से मॉडलिंग हो सकती है, देन डीप लर्निंग इज मेकिंग दैट थिंग ऑटोनोमस। ओके, आप किसी चीज को विदाउट प्रोग्रामिंग इफ यू कैन गेट समथिंग टू डू स्पेसिफिक टास्क, इट इज कॉल्ड डीप लर्निंग। Then there are certain other things, that is computer vision, NLP, and that is natural language processing. Computer vision, suppose मुझे face recognition करना है तो I have to understand the computer vision. मुझे अगर languages के ऊपर वो देखना है कि what kind of इस जो text है उसमें से मुझे कुछ important insight निकालना है, तो फिर for that this NLP is required and so on. ऐसे बहुत सारी अलग अलग लाइब्रेरीज, बहुत सारे अलग अलग मॉड्यूल्स हैं। बट वही मैं कह रहा हूँ, डॉक्टर बनने के बाद आप उसमें ऑर्थोपेडिक में जाते हो, आप पेडियाट्रिक्स में जाते हो, आप गायनेकोलॉजी में जाते हो, आप किसी और फील्ड में जाते हो, बट यस यू आर कॉल्ड अ डॉक्टर। तो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि ये कंप्यूटर विजन हो गया, दैट इज समथिंग इफ यू वांट टू रिलेट, इट इज ऑर्थोपेडिक्स। एनएलपी वो हमारा गायनेकोलॉजिस्ट हो गया। तो यू कैन नॉट यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू डू एवरीथिंग, you are required to do a very specific task. Then advanced Excel, because Excel भी मैं पढ़ाऊंगा, advanced Excel भी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। Why? Because most of the companies are still hooked on to this particular thing. Okay. Then there is SQL. SQL is जो मेरा databases हैं उनको retrieve करने के लिए, और डेटा को retrieve करके हमें उसके बाद उनसे उनको मैं अपने मॉडल में डाल सकूं। I'm Oracle certified. So this thing was pretty was used and was valued back in 2011-12 also, and it has definitely helped. But companies, they are able to do a lot of good work with using Excel also. Then उस डेटा को मुझे दिखाने के लिए, बताने के लिए, I need BI tools, that is Power BI, Tableau, and so we will be going with this also. अब सब कुछ सीख लिया है, तो अब मुझे उसको डिप्लॉय करना आना चाहिए, राइट? So that is why this deployment is have designed this module also. These all are different modules which we'll be going to. There will be certain modules depending on your interest, but I'm telling you that these four things, they are a must. अगर आपने ये चार चीजें सीख ली हैं, सॉरी चार मैं कह रहा हूँ, स्टैटिस्टिक्स, पाइथन एंड मशीन लर्निंग, यू आर गुड टू गो। यू आर ready to sit in for an interview and see you must आप किसी भी इसमें जाके चेक करना, because what right now what I'm hearing is कि 7.5-8 लाख का पैकेज लग रहा है एक डेटा साइंटिस्ट एंड ऑल। दिस इज नॉट ट्रू। people are earning way beyond their expectation, ठीक है, एंड बहुत अच्छे पैकेज लग रहे हैं। वाई? बिकॉज व्हाट दे, आपका कोई रोल फिक्स नहीं है इन एनी कंपनी। मैं उनसे पूछता था लाइक मेरे पास कोई कंपनी, मेरे पास और मैं छोटी कंपनी का नाम नहीं लूंगा, आई हैव बीन टॉकिंग टू Amazon, आई हैव बीन टॉकिंग टू iRobot, आई हैव बीन टॉकिंग टू Uber, एंड आई वाज लाइक ओके आपका जॉब प्रोफाइल, व्हाट डू यू, व्हाट रोल डू यू वांट? दे आर नॉट, many companies are not clear with the role also. They have their own terms कि मैं तो ना अपने मैं जिसको अभी हम हायर करेंगे, we will make them this forecasting engineer। मैंने कहा यार अब forecasting engineer क्या होता है? मैंने कहा this is a simple new term for me and for everybody else, but this is what data analyze करके जो insight produce करता है कि ओके आपको इस तरह के नए एम्प्लॉयज हायर करने चाहिए, आपको अपनी ऐसी फाइनेंस मैनेज करना चाहिए। इफ इंजीनियर इज एबल टू डू दैट, and they are called forecasting engineer. So nothing is sacrosanct. Things are changing very rapidly with time. Okay.
So this is the overall broad of the course, and I have a lot of more things to speak, to tell you, and to to share with you. तो इसके अलावा you need not rely on, अब लोग मुझे कहते people are asking कि मुझे बुक्स पढ़नी चाहिए या पहले कुछ आना चाहिए. No, nothing is required till the time you are done with this machine learning module. आपको बुक को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है. Yes, I will be sharing some articles, I'll be sharing some case studies जिनको पढ़ के आपको पता लगेगा कि okay, what you are trying to learn is how of how much importance to you. So these things will definitely help. So books, they have a lot of knowledge, and you read all of it, and फिर आप थोड़ा सा हर डायरेक्शन में जाने की सोचते हो. They are not, they're structured, but for a top for a particular subject, they have not had the capability to interconnect and interrelate things. Okay, so that is what is important when you go for a job, because you need to talk. And there are certifications. I have been talking to the founder and to Gaurav sir also. See, there are certifications. Yes, they are important, and with doing this course, you will be able to go for any certification. There are many which I can share with you. I'll just there is many. I'll just complete it, that there are many certifications which yes you can do. And but while sitting for a job, I will be very realistic, and I'll be very truthful to you all, because this is a long journey which we have to travel together. So इस case के अंदर certifications are important, but yes, more important is the knowledge which you have, the project on which you have worked. You'll be working on Kaggle also. It is something, अगर आपने Kaggle के अंदर आपका कोई आपकी रैंकिंग है, अगर आपका what we call अगर आपका स्टैक ओवर के ऊपर आपका सपोज कोई रैंकिंग है, and the project which you have done with your own hands, with your own mind, अगर आप उसको आपने कैसे टैकल किया था, that is all what matters. I have I have I have seen people cracking interviews, and those interviewers, I've sat with them, and they were actually, when they go through the resume, they just see okay, इसको ये आता है, let us ask them. They are not looking for आपका, for many companies your certification hold 0% value, and for many companies it hold around 1 to 2%, yes, but not more than that. Certification will help you, but just for your own satisfaction, for getting a job, for excelling in this field, आपको knowledge होना जरूरी है. So I will just say that only technical skill is not required. You need to have soft skill also. You need to have analytical thinking also. These two terms are very, very important. Okay, I think I have covered most of it, and the time is also around. I've gone 10 minutes up from because it was saying, I think it was scheduled from 9 to 10, and I would like to speak to you more about it, because there is a lot which I think that it will be covered in introductory sessions which are scheduled for the next week. So I hope to see you guys again soon. And if you have any questions related to anything, job kaisi hogi, are we eligible, should we go for it, anything, you can ask me. You can shoot the questions. आप unmute करो, and one by one you can ask me questions, please. And guys, one more thing. So how we have decided to deliver this particular program. So initial from 5th onward, we have a kind of a workshop where for a 1 week, every day it's around 1.5 hours. We are going to deliver the concepts, whatever the concept is mandatory, and how the basically the process, the flow which we are going to follow for the further classes. So if you want, you can register for the initials workshop, and then once we're done with the workshops, you can enroll for the master programs. This master program is around 120 to 130 hours of programs. Okay, thank you, Gaurav.
anybody having any question, I would like to entertain it and to try to answer it, please. Okay, so I don't think so. I think I have spoken a lot and I have tried to give you an insight of what it is, what all of it is, and I hope to see you again. Anything, Gaurav? Should I say something else, or we are good to go? Gaurav, should we close down the session? Okay, okay. Thank you, everybody, and thanks for joining session. I think I should leave. If any questions, I haven't got any questions. Thank you so much. Thank you. Thank you. Bye. Hello. Yes, हेलो गौरव सर। Ajay, please. यस सर, मैं थोड़ा लेट में ज्वाइन किया था सर। जीएस पटेल बोल रहा हूँ। हाँ जी, yes, बेटे. एक्चुअली सर मैं एक नेटवर्क इंजीनियर हूँ, और ये जो अपना मतलब एआई जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इसके जो है डाटा जो है, ये किस किस टाइप का मतलब जो है इसमें मतलब हमारे जॉब प्रोफाइल में काम आ सकता है सर? Uh, to be very frank, data has to. तो फिर आप नेटवर्किंग के रिगार्डिंग पूछ रहे हो या आप एआई के रिगार्डिंग पूछ रहे हो? व्हाट यू वांट टू चेंज योर अब दोनों को एक्सपर्टीज या? जोड़ करके, जैसे मतलब जो है एआई जो है आज के डेट में, मतलब एआई का ही जमाना है, बता रहे हैं जिस हिसाब से अभी मार्केट में इसका बूम है कि, तो इस टाइप का मतलब नेटवर्क इंजीनियर को एआई का जॉब के लिए, मतलब जैसे बोलते हैं कि मतलब जो है एआई कर लिया तो आपने मतलब कुछ नेटवर्क के क्षेत्र में कुछ इसका वैल्यू है क्या? There are different profiles for the same. आप अगर suppose if you are working with Airtel, if you are working with Apple, आपको वहाँ पे routers वगैरह की handle करने की job मिलती है, okay? So it is a little bit different from that. आपको जो अगर आप as a data scientist आप अगर AI के अंदर जाओगे, तो in that uh, your domain will shift. इन दिस यू विल बी आस्क कि ओके एक जगह पे अगर आपको टावर लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, एंड जहाँ का, और अगर आपको एक तरह के सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं तो व्हाट आर द मेजर्स यू कैन टेक. तो इट्स अ बिजनेस सेंट्रिक थिंग. तो नेटवर्क इंजीनियर्स के लिए
yes, आगे जाके there are certain models जिसके अंदर if you have certain data, there is called there are CSV values, comma separated values हमारे पास आती हैं, and with that you give an insight of your data and give suggestions to the business. But yes, for the network per se, these are two different fields. I hope I have answered your question. अगर और कुछ अगर आप पूछना चाहते हो तो ओके सर, ओके, थैंक यू सर। okay, thank you Patel.